Clart Vocabulary, Set 8. Hello students. Welcome to Success Studio. Today, we are back with Clart Vocabulary, Set 8, where we'll learn 20 powerful words that will boost your vocabulary and confidence. Listen carefully, repeat after me, and try to use each word in your daily conversation. And if you are enjoying these lessons, don't forget to like, share, and subscribe to Success Studio for more daily vocabulary videos. Let's start learning. Word 1 Audacious meaning, bold and fearless. Nidar or sahasi. Example, his audacious plan surprised everyone. उसकी साहसी योजना ने सभी को चौंका दिया. Word 2 Bolster. Meaning, to support or strengthen. सहारा देना या मजबूत बनाना. Example, good reviews bolstered his confidence. अच्छी समीक्षाओं ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया. Word 3 Coerce. Meaning, to force someone to do something. किसी को मजबूर करना. Example, they were coerced into signing the agreement. उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया. Word 4 Diligent meaning, hardworking and careful. मेहनती और सावधान. Example, she is a diligent student who never gives up. वह एक मेहनती छात्रा है जो कभी हार नहीं मानती. Word 5 Elude meaning, to escape or avoid. बचना या निकल जाना. Example, the thief managed to elude the police. चोर पुलिस से बच निकलने में कामयाब रहा. Word 6 Feasible meaning, possible or practical. संभव या व्यवहारिक. Example, the plan is not feasible in this situation. यह योजना इस स्थिति में संभव नहीं है. Word 7 Gratify meaning, to please or satisfy. संतुष्ट करना या खुश करना. Example, the praise gratified the hard-working team. प्रशंसा ने मेहनती टीम को खुश कर दिया. Word 8 Hypocrisy. Meaning, pretending to have good qualities one doesn't possess. ढोंग या पाखंड. Example, his speech against corruption was pure hypocrisy. भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका भाषण मात्र पाखंड था. Word 9 Impede. Meaning, to delay or block progress. बाधा डालना या रोकना. Example, heavy rain may impede the construction work. भारी बारिश निर्माण कार्य में बाधा डाल सकती है. Word 10 Judicious. Meaning, showing good judgment or sense. समझदारी भरा या बुद्धिमानीपूर्ण. Example, she made a judicious decision in the meeting. उसने बैठक में समझदारी भरा निर्णय लिया. Word 11 Lament. Meaning, to express sorrow or regret. शोक या दुख व्यक्त करना. Example, people lamented the loss of their leader. लोगों ने अपने नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया. Word 12 Myriad. Meaning, a countless or extremely great number. असंख्य या बहुत बड़ी संख्या. Example, there are myriad stars in the sky. आसमान में असंख्य तारे हैं. Word 13 Nurture. Meaning, to care for and encourage growth. पालन पोषण करना या बढ़ावा देना. Example, parents nurture their children with love. माता पिता अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करते हैं. Word 14 Opaque. Meaning, not transparent or hard to understand. अपारदर्शी या कठिन समझने योग्य. Example, the professor's explanation was too opaque. प्रोफेसर का स्पष्टीकरण बहुत कठिन था. Word 15 Perplex meaning, to confuse or puzzle. उलझन में डालना या भ्रमित करना. Example, his strange behavior perplexed everyone. उसका अजीब व्यवहार सभी को उलझा गया. Word 16 Quench. Meaning, to satisfy thirst or desire. प्यास या इच्छा बुझाना. Example, cold water quenched his thirst. ठंडे पानी ने उसकी प्यास बुझा दी. Word 17 Reluctant meaning, unwilling or hesitant. अनिच्छुक या हिचकिचाने वाला. Example, she was reluctant to share her opinion.
वह अपनी राय साझा करने में हिचकिचा रही थी। Word 18 substantiate meaning, to prove or support with evidence. सबूत देकर साबित करना। Example, the lawyer substantiated his claim with documents. वकील ने अपने दावे को दस्तावेजों से साबित किया। Word 19 tactful. Meaning, skilled in handling difficult situations. समझदार और संवेदनशील। Example, he is tactful in dealing with customers. वह ग्राहकों से निपटने में बहुत समझदार है। Word 20 witty meaning, clever and humorous. चतुर और मजाकिया। Example, his witty comments made everyone laugh. उसकी मजाकिया बातों ने सभी को हंसा दिया। Okay, these were 25 important words of set 8 of this series. See you next in set 8 of the SCLART Vocabulary SET 9.